Bhakti poetry has been an integral part of India's literary and cultural heritage, which reflects the enduring power of personal devotion and the universal quest for a deeper connection with the divine. What is bhakti? It is devotion or love, and bhakti poetry reflects a deep, personal, and emotional connection between the poet and the divine. Annamacharya, Mirabai, Tukharam, Sant Kabir, Andal, the other Sri Vaishnava Alvars, the Shaiva Nayanmars, Purandaradasa, Guru Vyasatirtha. The list is endless. These bhakti poets explored themes of love, surrender, and the longing for union with the divine. They used metaphors, allegories, and vivid imagery to convey the deep spiritual experience, and what's more, they spoke the common man's language. A very warm namaste to all. My name is Sangeeta Venkatesh, and it is our first meeting of the year 2024 on our Chanting for Healing group. We are a small group that chants and prays together, and we are all from different parts of Bangladesh. We have found that this collective prayer group, where we chant together or discuss certain aspects of spirituality, all this has given us a lot of value as well as a lot of peace, if I may say so. So, in this small group, I was so humbled to interact with such talented members who penned such beautiful lines and verses, and I thought we should celebrate this inaugural meet with our own bhakti poetry. We have 4 poetesses, and they have chosen Hindi as their choice of language. And our first Kaviyatri is Aparna Ghosh. Aparna Ghosh, now a homemaker, dedicated over a decade to working in training and human resources. A commerce graduate holding a diploma in international business management, she combines her professional background with diverse interests. A passionate aficionado of Hindustani classical vocal music, Aparna also holds a keen fascination for handloom and handmade creations. Beyond her varied pursuits, she expresses her emotions eloquently through both Hindi and English writing. Adept at translating her feelings into poetic verses, Aparna's compositions have garnered praise and recognition in numerous online forums. Additionally, her poetry has found home in popular newspapers and anthologies, solidifying her presence in the literary realm. So I'd like to invite Aparna now to, regale us with her poetry. Go ahead, Aparna. Thank you, Sangeeta, and a very happy new year to all of us. And first of all, I would like to thank you because there are for sharing so many aspects of bhakti with us and wholeheartedly with us and enriching our lives. कहते हैं ना, गुरु बिन कौन बताए बात. तो आपने क्या किया कि भक्ति के इस महान समुद्र से जैसे एक चुनिंदा मोती हमारे लिए आप ले आए, और सिर्फ ले ही नहीं आए, हमको समझाया और हमारे जीवन में उसको कि हम उसका पालन कर सके, ऐसा भी किया. तो ये जो मतलब इसके लिए तो कितना आभार मैं दे नहीं सकती. I cannot give you, there are no words of thanks for that. And also to this beautiful group, because I have met most of you and not met some of you, and but you have been an anchor in bad times and an inspiration in good times. So thanks a lot for that. And then came that difficult thing of writing on bhakti, क्योंकि भक्ति पे लिखना कितना सहज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ लिख नहीं पा रही हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ. एंड देन समथिंग केम अबाउट व्हिच आई कुड राइट. मेरी कविता का शीर्षक है भक्ति बने जीवाधार. जीवाधार क्योंकि मुझे लगता है जीव का आधार. मेरा जो जीव है, मेरे अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, उसका आधार मैं भक्ति को बनाना चाहती हूँ. तो कविता का शीर्षक है भक्ति बने जीवाधार. ग्रंथों की शिक्षा के पार, मंत्रों की दीक्षा के पार, हर भ्रम हर दंभ के पार, हे हरि भक्ति बने जीवाधार, भगवान कर दो नैया पार. नियमों की दृढ़ता के पार, कर्मों की स्थिरता के पार, हर दान हर मान के पार, हे हरि भक्ति बने जीवाधार, भगवान कर दो नैया पार.
धूप दीप गंगा जल के पार, धूप दीप गंगा जल के पार, आत्मा के कोलाहल के पार, हर इच्छा हर हार के पार, हे हरि भक्ति बने जीवाधार, भगवान कर दो नैया पार। हर शंका के द्वंद के पार, हर शंका के द्वंद के पार, इच्छा पूर्ति के आनंद के पार, हर साधन हर संग के पार, हे हरि भक्ति बने जीवाधार, भगवान कर दो नैया पार। जन्मों के आवागमन के पार, जन्मों के आवागमन के पार, भव सागर में रमन के पार, हर बंधन हर मुक्ति के पार, हे हरि भक्ति बने जीवाधार, हे हरि भक्ति बने जीवाधार, भगवान कर दो नैया पार। द लास्ट पैराग्राफ माय फेवरेट, क्योंकि जन्म भी आएंगे और फिर इस भव सागर में लीन भी हो जाएंगे, पर यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भक्ति साथ में, सिर्फ भक्ति साथ में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। You, Aparna, you won't believe it. Really, I have goosebumps, and it's really from the heart, and I just loved it. Thank you so much. Thanks so much, and it's an opportunity to write something like this. Aparna, can't thank you enough for this. It's beautiful. Thank you, Ela. You are the person for whom I started writing again. So this is also for you. Thank you so much for that. Thank you. Hey, gratitude. It's like divine. Very nice. मजा आ गया. धन्यवाद. Very beautiful. Very, very beautiful, Aparna. I mean, it is exactly like you. And to be honest, somewhere I was expecting something like this coming from you, giving me further butterflies in my stomach. Thank you, love. Thanks so much. So we have Kavita. Her parents named her very appropriately. हमारी दूसरी कवयित्री है डॉक्टर कविता बाजपेयी. Kavita is director and co-founder of the International School of Trishul, a Cambridge International Pathways School, and Sprouts, an upcoming premium preschool chain. A passionate educationist, among other accolades, the Femina magazine had listed her as one of the 50 most influential women of the country in their 2020 edition. So Kavita says that poetry embodies a spontaneous connection with herself and those around her. It unfolds as a voyage of self-explanation influenced by observations, experiences, and the ebb and flow of emotions. Many of us have heard her on Facebook and other online forums, and I was always very, very touched and impressed by the sheer flow of words and also the soothing rendition that she always presents to all of us. So can't wait to hear you, Kavita. Yes. So, yes, as Aparna rightly said, so I won't repeat it. That's how in the chat box I have written +1, because whatever she has said about Sangeeta, about this group, about each one of you, I echo that, totally resonate. And Sangeeta, today, not only today, whenever there is some halchal in this group, believe you me, one assurance is there that it will be positive, and that's the only group which has this assurance that halchal is going to be positive. So kudos to you and thank you so much. As she rightly said, writing on bhakti is the toughest thing, because spirituality, being religious, or understanding life, at least I find myself very raw in all these aspects when I think about it. And then when I was just thinking, then I thought, what? And suddenly it came to my mind, तुम नहीं तो कौन. और यही मेरी कविता का शीर्षक है आज, कि तुम नहीं तो कौन. फर्स्ट अटेम्प्ट है भक्ति पोएट्री का, आज ये भी कर लिया, देखते हैं कैसा जाता है. सो यस, मेरी कविता का शीर्षक है तुम नहीं तो कौन. तुम ही हो कान्हा, तुम ही हो शंकर, तुम ही आदि, तुम ही अनंत कर. यमुना तट पर रास तुम्हारा, काशी घाट का हो जयकारा. या बंसी हो या फिर डमरू, पांव थिरकते बजते घुंघरू. तुम्हारी थाप तुम्हारी मुद्रा, तुम ही पालक तुम ही रुद्रा. भस्म तुम ही हो गुलाल तुम,
तांडव स्तुति का ताल तुम। नाम तुम्हारे कितने ले लो, रूप तुम्हारे भले बदल लो। नाम तुम्हारे कितने ले लो, रूप तुम्हारे भले बदल लो। तुम ही हो करता, तुम ही हो भरता, तुमसे परे ना अमर अजरता। तुम साकार हो, तुम निराकार भी, तुम एकात्म हो, तुम भिन्न प्रकार भी। तुम हो प्राणवायु, तुम पंच तत्व हो, काम मद मोक्ष सबसे विरक्त हो। सूक्ष्म तुम ही सर्वव्यापी। जब उत्तर हो तुम तो क्यों आपधापी। तुम ही बना लो, तुम ही संभालो, जगत के पालक तारणहारो। हृदय समर्पित जीवन अर्पित, पाप पुण्य के भाव भी अर्पित। हृदय समर्पित जीवन अर्पित, पाप पुण्य के भाव भी अर्पित। ये चराचर से जीवन की चंचल माया, जड़ हो या चेतन या ये नश्वर काया। करो भयहीन हे अभयंकर, कि चले ये अधमी तुम्हारी लय पर। तुम ही हो जगमग, तुम ही हो तमहर, तुम ही हो आदि, तुम ही अनंत कर। तुम ही हो आदि, तुम ही अनंत कर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, Really nice. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी तारीफ करे उतना कम। Very nice. बहुत Thank you सुंदर, so बहुत Very nice. Loved it. कविता बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू Just everyone. bring Thank you the so much. बहुत essence सुंदर। of what do you say? You know, we have so many forms. Yes, so God is, comes in different forms for different things, for for different people, and that the concept of Ishta Devata is perhaps there only in Sanatan Dharma, and where you can latch on to your Ishta Devata, and he's your crutch, he's somebody to lean on, he, she, whatever, and I think that came out very well in your poetry, Kavita. I mean. Thank you Well, so much. Kavita is Thank your you. name, like I said. हमारी अगली कवियत्री हैं इला पचौरी. Ela Buari holds a postgraduate degree in environmental sciences and is a graduate in Indian classical music. As the creative founder of My Little Greens, an enterprise specializing in indoor plants, Ela seamlessly blends her passion for the environment with her artistic pursuits. Ela is from the beautiful state of Rajasthan and is deeply rooted in her cultural heritage, faithfully following traditions and rituals she observed while growing up. Alongside her professional endeavors, she nurtures a love for reading and travel. Ela's religious inclinations and spiritual mindset contributes to her holistic approach to life. Beyond her multifaceted interests, Ela is a poet at heart. Her words reflect not only her artistic expression, but also her commitment to environmental causes. An enthusiastic networker, motivator, and a green crusader, Ela Buari embodies a harmonious blend of tradition, spirituality, and environmental stewardship. Can't wait to hear you, Ela. We move to Ela. So I have written not one but two. I tried writing because वो है कि भक्ति पर मैंने भी बहुत कम लिखा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भक्ति और स्पिरिचुअलिटी दोनों they go side by side. If you are not deeply spiritual, bhakti does not matter then. That is my thought. So मैं कृष्ण पे मैंने एक कुछ लाइंस लिखी हैं, मैं वो आप सबको सुना रही हूँ. कोशिश करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी. मैं मुरली का नाद बन ब्रह्मांड में छा जाऊं. मैं मुरली का नाद बन ब्रह्मांड में छा जाऊं. पायल का घुंघरू बन सर्व सृष्टि को मैं नचाऊं. कृष्ण राधा गोपियों के संग सुंदर सरस नित रास रचाऊं. काली लकुटिया ओढ़ के मैं तो परमानंद में खो जाऊं. मंद स्मित मधुर हास्य से दुख का तिमिर मैं पिघलाऊं. मंद स्मित मधुर हास्य से दुख का तिमिर मैं पिघलाऊं. जीवन के इस महासमर में गीता सा ज्ञान मैं पा जाऊं. यमुना के तीर पर खड़े कृष्ण की एक झलक मैं पा जाऊं. गैया की टेर संग संग मैं बछड़ा बन के रंभाऊं.
गहन कदम्ब की छैया तले मैं क्लांत हृदय को दुलराऊं, गहन कदम्ब की छैया तले मैं क्लांत हृदय को दुलराऊं, वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण कहीं तो पा जाऊं, कृष्ण कृष्ण जपते जपते मैं भव सागर को तर जाऊं, दीन सुदामा सा मित्र बन मैं कृष्ण को सूखे तंदुल खिलाऊं, ब्रज की रज बन जाऊं मैं कृष्ण के अंग अंग लग जाऊं, ब्रज की रज बन जाऊं मैं कृष्ण के अंग अंग लग जाऊं, कृष्णमयी सृष्टि के कण कण में स्वयं कृष्ण में हो जाऊं, इस कृष्णमयी सृष्टि के कण कण में स्वयं कृष्ण में हो जाऊं, स्वयं कृष्ण में हो जाऊं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अप्रतिम, बहुत सुंदर, क्या वेरी विविड, बहुत सुंदर। इसे कंपोज कीजिए, बहुत सुंदर, लिरिकल, ब्यूटीफुल। कोशिश करेंगे, हाँ कोशिश करेंगे। तो क्योंकि लिखने को बहुत जब सोचते हैं ना तो ईश्वर पे कैसे लिखें, क्या लिखें, समझ नहीं आता है। तो ये मैंने एक लिखा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत कुछ मन में होता है पर लिखना उसको लगता है लिखा ही नहीं जाना, बहुत कम है और बहुत कुछ लिखना है। थैंक यू संगीता, इवनिंग एक्चुअली, है ना। और I really found that imagery, of actually Vrindavan, with the bachras and everything. Wonderful, really. That is what very beautiful. Perhaps the Bhakti poets in the past also, and they just paint that in words, So our last Kaviyatri poetess for today is Tapasia Bhatt. She may be very young in age, but her poetry exhibits a rare maturity. Tapasia is a poet and freelance copywriter, is proficient in expressing herself through the languages Hindi, English, Hindustani and Gujarati. Her debut book of Hindustani poetry, Ehsaas Ki Zaban, is available on platforms like Amazon and Flipkart. And I have a copy of it, and I highly recommend everyone to get a copy and read this amazing poetry, which really touches the heart, and it just broadens your own exposure to literary works. So in her writings, Tapasia delves into the depths of a soul, exploring a spectrum of emotions. Her poetic canvas spans themes it's quite diverse, from love to loss to the intricacies of human relationships, addressing topics like mental health, surrender, and of course, devotion. For Tapasia, the philosophy of acceptance is bliss instead of ignorance is bliss holds significance, emphasizing the acknowledgement of diverse situations that life presents and the people encountered on the journey. So, spirituality on an experiential level has been transformative for her, infusing immense faith and gratitude into her life. This profound connection with spirituality serves as a wellspring of inspiration, guiding Tapasia to articulate her thoughts on various facets of devotion in her writing. So, Tapasia, I just can't wait to hear you too. I can't wait to hear Tapasia. Yes, thank you so much for this. My heart is already pounding. I don't know. So I had told Sangeeta ji that, I had devotion in me, but she brought surrender in me. So that's what. And भगवान के साथ तो हम सबका ही नोक झोंक का रिश्ता ही होता है, लव हिट, इट इज ऑलवेज लव हिट विद गॉड, जैसे माँ बाप के साथ होता है. तो मैं ये कविता जो है मेरी किताब में नहीं है, ये मैंने नई लिखी है. इट गोज लाइक दिस. तुझे भक्ति का नशा हो गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता. तुझे भक्ति का नशा हो गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता. देख तेरे भोलेपन का नतीजा, भोले भंडारी ने तुझको लूटा. तुझे भक्ति का नशा हो गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता. सोहबत इसकी ठीक नहीं, पीछे है भूतों की टोली. मैं कह रही हूँ कि भगवान की जो संगत है ना, वो ठीक नहीं है, वो बिगाड़ भी सकते हैं आपको.
सोहबत इसकी ठीक नहीं, पीछे है भूतों की टोली, कहकर ये तुझको समझाया, तूने हंसकर ध्यान लगाया। इस राह से लौट नहीं तू सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे भक्ति का नशा हो गया। तू भक्ति की अग्नि में जलता है, वो भस्म लगाकर झूमता है। डमरू की डमक डम में दोनों का तांडव नृत्य चलता है। भक्त और भगवान दोनों तांडव कर रहे हैं यहाँ। तू भक्ति की अग्नि में जलता है, वो भस्म लगाकर झूमता है। डमरू की डमक डम में दोनों का तांडव नृत्य चलता है। इस चक्कर से बाहर नहीं आ सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे भक्ति का नशा हो गया। तुझे काल का कोई भय नहीं, महाकाल में तू मग्न रहता है। तुझे काल का कोई भय नहीं, महाकाल में तू मगन रहता है। इस रोग की कोई दवा नहीं, जिसे प्रभु मिलन तू कहता है। ये बंधन तोड़ नहीं तू सकता, ये बंधन तोड़ नहीं तू सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे भक्ति का नशा हो गया। इसके बाहर भी एक दुनिया है, जरा तर्क वितर्क से काम ले। इसके बाहर भी एक दुनिया है, जरा ये समाज कह रहा है भक्त को। तो आसान नहीं है, जो कोई भी आध्यात्म या भक्ति की राह पर चल पड़ा है, समाज उसको कैसे पीछे खींचता है। संसार, नॉट समाज, पर इसके बाहर भी एक दुनिया है, जरा तर्क वितर्क से काम ले। कोई निशानी छोड़ यहाँ वहां कि तुझे वापसी की राह मिले। और देखी नहीं जाती तेरी तपस्या, तुझे भक्ति का नशा हो गया। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सच में किसी का I mean, very few people are, I think, for that also you need the Lord's anugraha. That's what we say. Even to get that kind of bhakti, even to have a meeting like this, it is, you need God's anugraha. Jyoti, I think your thing is okay. Yeah, okay. It is making noise. Yeah. And we finished with everybody, all the Kavitris. Now, what are the chances that a small group like us, and you have such brilliant, talented people, just what are the chances? I just cannot understand. And I'm just feeling so blessed, because I cannot articulate after listening to you. I'm getting goosebumps constantly. You were also articulate. Exactly. I am lots of words right now. नहीं, अभी अनुग्रह ना, अनुग्रह ईश्वर का हम सब पर हमारा अनुग्रह है कि we are all together, हम सब साथ में हैं यहाँ। Exactly. संगीता, it is. कविता बोलो। सुन रही हूँ मैं। I'm still, I don't know. I'm in trance. I'm in trance right now. Sangeeta, when you mentioned in the group ना भक्ति पे कविता लिखने के लिए, I started writing. और फिर रुक गई बिल्कुल। पढ़ दो। नहीं, पढ़ना ऐसे है कि आप सबकी इतनी अच्छी इतनी वेल आर्टिकुलेटेड कविताएं लिखी है ना मैंने, मुझे लग रहा है जैसे मैं तो बहुत छोटे बच्चे जैसे कुछ लिख रही थी। बच्चे सबसे ज्यादा पसंद है। जो वात्सल्य भाव है वो ईश्वर को भी सबसे ज्यादा पसंद है और सबके दिल को भी वही छू गई। Absolutely. और पता है फिर ना मैंने ना ऑनेस्टली जाके ना गूगल किया, मैंने तपस्या की कुछ कविताएं देखी, मैंने अपू की तो मैं पढ़ती रहती हूँ, सबका आप लोगों का देखती थी। मैं कहा नहीं, ये मुझसे ना होने का, अच्छे से सुन लेती हूँ, समझ लेती हूँ भक्ति क्या है, बहुत हो जाएगा। इला तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आप लोग तो सब बहुत अच्छा लिखते हो और बिल्कुल मन को लग जाता है, खुश हो जाती है। So absolutely good party. Beautiful start to the year. And if we have started on this, it have been a better start. That let's be at it. And I just love the participation today. Wow, 11 people. I'm actually ready to dance. So I'm going to pause the recording stop unless Kavita wants to sing another poetry. I'll not mind because there's something
Especially during the festivals, actually, I remember my native a lot because I come from Bundelkhand region, and there the festivities are slightly different than other region of the country. So I was just remembering how we used to celebrate when we were young. So I had written something, not something which talks about a lot of the festivities and the culture and all, but it is just the experience what I had gone through. So if you all are okay with that, I would like to share. Of course, yes. Of course, more than okay. So it's about how we used to celebrate Makar Sankranti. And in between, I will tell you whenever I feel that the word is something which is, maybe it is new for you all. हमारे यहाँ संक्रांति पे क्या होता है, मिट्टी की एक गाड़ी होती है, उसको सूरज का रथ बोलते हैं, उसमें पहिए लगे होते हैं और उसमें बहुत सारे लड्डू भर के ना सारे बच्चे से घुमाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं. That was the childhood memory, the first memory when I talk about Makar Sankranti comes to my mind, and it is more about exchanging of अपने घर के लड्डू उसके घर में, and variety of लड्डू. And मकर संक्रांति के एक दिन पहले we made everything तला हुआ, and next day it is a खिचड़ी day, so it is all about that. प्यारी नटखट बचपन की यादें, कैसे हम बुंदेली त्योहार मनाते, मिट्टी की सूरज की गाड़ी में भांति भांति के लड्डू सजाते, लड्डू लाई चना फूला तिल वाले, लैया सब लोग जानते हैं, that mamra what we call. Then we have chane ka laddu, and fula is something that is, I have not seen this side, but Bundelkhand side में we see that it is a small form of popcorn kind of a thing. So लड्डू लाई चना फूला तिल वाले, अदरक गुड़ के सौंधेपन वाले, जब सबके साथ मिल बैठ बनाते, मेरे तेरे घर के लड्डू तेरे मेरे घर में जाते. एक दिन पहले जब सब मिलते, दुनिया पतंग हम दावत उड़ाते. हमारे यहाँ काइट फ्लाइंग नहीं होती है, so that's how I'm saying कि दुनिया पतंग हम दावत उड़ाते. थडूला बड़े कचौरी मुंगौड़ी. एक दिन पहले थडूला इज अदरक मटर उड़द की दाल, ये सारा सब क्रश करके अच्छे से भून के उसको आटे में गूंद के then we make पूरीज. So थडूला बड़े कचौरी मुंगौड़ी गर्मा गर्म तली हुई खाते, भोर जागकर ठंडे पानी से तिल के लेप से रगड़ नहाते, हर हर गंगे की बुडकी ले ठंड का हाहाकार मचाते, छोटे छोटे हाथों में हम बड़े बड़े थैले लटकाते, दान दक्षिणा भरकर उसमें दौड़ लगाते देकर आते. 56 भोग को मात देती हुई खिचड़ी ऐसी स्वाद बन जाती, घी डाल जी भरकर उसमें पंगत जैसे सब छक्कर खाते. आज याद करने पर पाया ये सब तो कुछ और ही था, हमारे लिए हुल्लड़ सा होगा, बड़ों का मनोरथ और ही था. खेल खेल में हमें सिखाया मौसम के हिसाब से जीना, हंसना और हंसाना सबको मिल बांटकर खाना पीना. सूर्यदेव साकार ईश रूप है, सूर्यदेव साकार ईश रूप है, भोर की बिरिया जो दे अर्घ, पहला कौर तिल गुड़ का खिलाकर सिखाए नियम पद्धति निसर्ग. शरीर है नश्वर ये ज्ञात है, पर स्वस्थ रहना भी गूढ़ बात है, जो है सब प्रकृति प्रदत्त है, ना दम्भ अहम अभिमान करना, मान सभी का बना रहे, यूं छिपाकर दान करना. कैसे आसानी से गूंथ गए वो प्रकृति का सम्मान करना, कैसे आसानी से गूंथ गए वो प्रकृति का सम्मान करना. Thank you. I got goosebumps while you were reading. So it has been such an enriching evening, and I'm so glad about my decision of holding this session. I'm going to pat my back for that, and I've decided to make this session public and put it on my YouTube channel Sujan with Sangeeta, and I hope everyone who accesses it will enjoy what you have shared with all of us. And like a typical YouTuber, I will say like, subscribe and share, and we want to reach as many people as we can. So with that, we come to an end of this evening. Thank you all for joining. Hari Om and God bless.